Bismillahirrahmanirrahim. Welcome all of you in the written work of biology for grade 8. Today we start question number 3. अपनी साथ स्टेशनरी पकड़े, कॉपी भी उठा लें. क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट किया है हमने, फिनिशिंग लाइन लगा दे, सब लगा लिया. तो चलिए इंस्ट्रक्शन सुन लें. हेडिंग को कैपिटल लेटर से, डबल अंडरलाइनिंग, यूज़ ब्लू मार्कर फॉर हेडिंग. एक्सप्लेनेशन के लिए पेन यूज़ करोगे और जिस जगह पे मैं बताती हूँ कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करें तो आप लोगों ने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करना है. 1 2 3 या ABC आ जाए तो मार्जिन लाइन के अंदर उनको ब्लैक मार्कर से लिखना है. रूल ज़रूर फॉलो करने हैं, अदरवाइज चेकिंग में फिर आप लोग के लिए सही मिस्टेक्स निकलेंगे. कॉपी को बिल्कुल नीट और क्लीन लिखना है. जिन क्वेश्चंस के साथ माइंड मैप नहीं बनता तो वहाँ पर हम माइंड मैप नहीं बनाते, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज क्लासिफिकेशन? डिस्क्राइब द बेसिस, एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन. आंसर, यूज ब्लू मार्कर फॉर क्वेश्चन नंबर 3, फॉर क्वेश्चन राइटिंग, फॉर आंसर and again for heading, that is classification. The arrangements of living organisms by which biologists divide organism into groups and subgroups, ठीक है, into groups and यहाँ पर again सुन ले, the arrangement of living organisms by which biologists divide organism into groups and subgroups. दूसरे पेज पे सब ग्रुप आएगा. ग्रुप्स को आप लोग ब्लैक मार्कर से लिखें, ब्लैक मार्कर से आप लोग ग्रुप्स को लिखें. नेक्स्ट पेज अगेन जूम कर लो कि आप लोग को क्लियर दिखाई दे. ग्रुप्स और सब ग्रुप्स को आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से लिखना है. ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. एक्सप्लेनेशन का हेडिंग दे दें. Biologists have identified and described about 2 million kind of organisms, 0.5 million types of plants and 1.5 millions of animals. 2 million को आप लोग ब्लैक मार्कर से लिखें. 2 million. These are only the small percentage of the total kinds estimated to the life on the earth. To study such a large collection of organisms, biologists classify them. Again heading, use blue marker. Basis of classification, old system. Aristotle, a Greek philosopher and scientist in 4th BC. एरिस्टोटल को ब्लैक मार्कर से लिखिए और 4 BC को भी ब्लैक मार्कर से लिखिए. Classified organisms on the basis of habitat, air, water and land. रहने की जगह, ठीक है, हैबिटाट मीन रहने की जगह. हैबिटाट को भी आप लोग ब्लैक मार्कर से लिखें. नाउ नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पेज में आप लोग के लिए फर्स्ट लाइन में है, however it was not justified is animal in one group may have nothing in common except their habitat. For example, fish and turtle cannot be placed in one group. Later on, biologists began to classify organisms on the basis of physical characteristics. Some of the characteristics which are used to classify organisms are prokaryotic or eukaryotic cells, unicellular or multicellular, autotrophs यानी photosynthetic और heterotrophs यानी non-photosynthetic. Again heading, modern system
Modern system of classification is based not only on the habitat and physical characteristic but also on genetic anatomy, physiology and evolutionary history. यहाँ पर हैबिटाट और फिजिकल कैरेक्टर्स को आप लोग इम्पोर्टेंट वर्ड्स समझिए और इनको ब्लैक मार्कर से लिख के, हैबिटाट एंड फिजिकल कैरेक्टर्स को ब्लैक मार्कर से लिख के. Now again, heading ends of classification. Heading ends of classification. अब इनके ends क्या है, ठीक है. So the classified organism into certain group, ठीक है. इनके जो ends है वो क्या है, इनके ends ये है कि यहाँ पर द एम्स ऑफ, यहाँ पर आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा लेकिन लिखिए, द एम्स ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इनटू सर्टेन ग्रुप्स आर, द एम्स ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स इनटू सर्टेन ग्रुप्स आर. फर्स्ट हेडिंग इजी स्टडी. It determines similarities and differences among organisms so that they can be studied easily. Phylogeny, it provides an idea about the sequence of evolution of organisms. Evolution को black marker से लिख के, from simple to complex, so phylogeny of organisms can be understood. Express relationship, it express relationship based on common feature. It express relationships based on common features. नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं. अगेन इनको जूम कर लेते हैं कि आप लोग को इसमें नज़र आ जाए. हेडिंग है यहाँ पे, फोर्थ वन इज प्रॉपर ग्रुप्स. 1 2 3 उस पेज पे हो गया, फोर्थ वन इस पेज पे है. फोर्थ को आप लोगों ने मार्कर से लिखना है मार्जिन लाइन के अंदर. To name and place the organisms in a proper group. Savage of time, ठीक है. Savage of time, savage of energy and time during the study of living organisms. Principles of classification. Biologists follow certain principles for classification. A few of the principles are: organisms are classified on the basis of apparent similarities among them. Organisms are classified in one group or in closer groups if they have more homologous structure. Homologous structure को black marker से लिख के, organisms are classified in one group or in closer groups if they have more homologous structure. नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं. नेक्स्ट पेज इज आल्सो कंसिडर्ड ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन. क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो गया. आप लोग फिनिशिंग लाइन लगा दें और क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. आप लोगों ने कॉपी नीट और क्लीन लिखनी है, माइंड मैप्स अच्छे बनानी है, ठीक है. हर एक दिन आप लोग 2-2 क्वेश्चन लिखा करें तो आप लोगों पे बर्डन नहीं होगा.